Good morning, students. I'm your teacher Hemlata Yadav, and I'm going to discuss the remaining questions of yesterday's sample paper, which we were doing. So, a very good morning to everyone once again. And I'm sharing the screen, and quickly we will be doing these questions. Number one, 25th question, given below the dichota embryo, label parts A, B, C, and D. And you can know if you have learned the stages of the embryo, then you can easily label them because the A part is the suspensor part you can see, and the B part is the root, we can say future root, which will be radical. The D part is the plumule because it is the stem and because it is nearby the cotyledons. So it will be plumule. And rearrange the stages of embryo development in the correct order. This is the next question. So you should know that mature embryo, और यहाँ पर जम्बल लप दिए हुए हैं सारे ऑर्डर, आपको इनको एम्ब्रियो बनने के स्टेजेस में लगाना है. तो पहला आएगा प्रो एम्ब्रियो. The first one will be pro embryo, then it will be heart shaped, the pro embryo, then globular embryo. The first one is pro embryo, the number one, because it is the early stage. Then it comes a globular embryo. Then afterward it comes heart-shaped embryo. And the last one is mature embryo. So these are the stages of the rearranged stages. The number one is proembryo. Second is globular. Third is heart-shaped. And fourth is mature embryo. Now, 26, a woman has certain queries about starting a contraceptive pills. As a biology student, would you be able to answer the following queries? What do contraceptive pills contain? So this is the question. What do the contraceptive pill contain and how do they act? So they contain the female hormones. They can artificial hormones are there, progesterone and estrogen. These hormones disturbs the menstrual cycle and it delays the ovulation. This is the concept of working. And the schedule is that the pills should be taken every day, daily for 21 days, and then 1 week they should not take it. And in that 1 week, the menstrual cycle, the menstruation bleeding will take place, and then again they have to, after 7 days, they have to start the pills. So daily a pill will be taken. So this will be the course of action. Answer the following question. What is Gauss's exclusion principle? So you should know in ecology, in organism population interaction topic, you know that Gauss has given the exclusion principle that the when two same species are present in an area, then the competitively superior species, the one which have more reproductive fitness, and in the presence of that superior one, if the reproductive fitness of the other species is hampered, is decreased, that means it will be threatening for the inferior one, and no two same species can exist in the area for a longer time. The superior one will be eliminating the inferior one. जब भी कोई दो same species एक एरिया में रह रहे हो, एक रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, तो जो सुपीरियर वन होती है वो इंफीरियर स्पीशीज को ग्रो नहीं होने देती और उसकी ग्रोथ को रोकती है, स्टॉप करती है, खुद ग्रो होती है. तो इसको एक और इतना होती है कि वो दूसरे वाले को खत्म भी कर सकती है, उस एरिया से हटा भी सकती है. इसी को एक्सक्लूजन बोलते हैं कि उसने उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया एरिया से. नेम द इंटरेक्शन बिटवीन फिग एंड वास्प स्पीशीज. आप फिग और वास्प स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है वो बताना है. So fig is a plant, flowering plant, and it gives us fruit fig. When it is in the flower stage, the wasp species lay eggs inside that flower, inflorescence, and then they fly off. And when it ovary develop into fruit, the larvae which are hatched from the eggs, they get nutrition, and the egg get growth nutrition from that fruit. And when the fruit burst, then the larvae is converted into adult and they fly off.
Then this interaction is called mutualism, because both the life cycle of the moth as well as of the fig plant, because pollination is done by these wasps only, is dependent on each other. जब भी कोई दो स्पीशीज एक दूसरे के लाइफ साइकिल के लिए डिपेंड होंगे तो वो म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं. तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म शो हो रहा है. व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग? गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर अवॉइड करना चाहे कोई, दो सेम स्पीशीज भी एक एरिया में रह रहे हैं और वो अपने रिसोर्सेज को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप के बिहेवियर को एडजस्ट कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज को टाइमली यूज करते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग. एंड द स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स एग्जांपल दिया गया है. बर्ड्स हैं वार्बलर्स, जो एक ट्री पे रहते हुए भी 5 species of warbler occupies a different area of foraging and different time for foraging, so that they do not interfere between them, and this is known as they have divided the resource between them. Next question 28 है. Bannerghatta National Park is given, Lalbagh Botanical Garden is given. The number of flora and fauna are continuously decreasing over the year due to several factors. ये दो पिक्चर्स आपको सामने दिखा रखी हैं. तो ये मेजर कंजर्वेशन मेथड्स को बताते ध्यान में रखते हुए जो कंजर्वेशन कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी का, उनको रिलेटेड क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड जो ए और बी यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं? तो ए, क्योंकि नेशनल पार्क है तो वो इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड का टाइप है, बिकॉज इन सिटू में द ऑर्गेनिज्म इज प्रोटेक्टेड इन देयर ओन एनवायरमेंट ऑफ द natural environment and on their site where they are present in the wild life is protected. Like in national parks, the organisms are free in the forest, and the very large area of the forest is uh, is assigned as a national park. And Lal Bagh Botanical Garden is a garden in which large number of trees, large numbers of plants, different varieties are grown and maintained in the growing stage. And this is the education for our educational purpose. And this is ex situ conservation. Differentiate between the two method, you have to differentiate on few points on these two. So this was the question. And next is draw a pyramid of numbers situation where large population of insects feeds a very big tree. तो एक बड़े ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं. इस तरह का आपको एक बनाना है पिरामिड, तो आप एक इन्वर्टेड पिरामिड बना पाएंगे क्योंकि ट्री का नंबर तो एक ही है पर इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा है. तो जब कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा होता है तो पिरामिड इन्वर्टेड बन जाता है. राइट टू लिमिटेशंस, दो लिमिटेशन बताने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, तो उसमें हमें ये बता सकते हैं कि जो डिकम्पोजर उनका कोई प्लेस नहीं होता पिरामिड्स में, प्लस फूड वेब्स को ये कंसिडर नहीं करता, जबकि नेचर में फूड वेब्स ही ये पॉसिबल होते हैं. फूड चेन पॉसिबल नहीं होती बिकॉज एवरी रिसोर्स इज ईटन बाय एवरी अदर ऑर्गेनिज्म. एंड ecological pyramids में one organism if it is a omnivore cannot have a place because उसमें primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer की अलग अलग places होती हैं. So its place is not fixed. So these are the limitations. Observe the karyotype given below and answer the following question. Identify the chromosomal disorder shown in the karyotype. ये कैरियोटाइप एक नीचे दिया हुआ है, इसका इंडिविजुअल का किसी का, उसको आपको बताना है कि कौन सा ये इंडिविजुअल है, कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शो कर रहा है. और एक ऐसा डिसऑर्डर भी आपको नेम करना है जो मोनोसोमी की वजह से होता है सेक्स क्रोमोसोम के. तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्स वाई लास्ट पेयर में रेड मार्क से एरो दिखा रखा है, यानी कि इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है. एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम अगर मेल में है तो ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम को शो करता है कैरियोटाइप. और दो सिम्टम बताने हैं, तो फेमिनिन growth like breast, like gynecomastia, called gynecomastia seen in that. And also the karyotype also shows that the overall masculine development but feminine characters are seen. The
testes are sterile, it is seen, and write the name the disorders a human suffer from the monosomy of the sex chromosome. मोनोसोमी की वजह से क्या होता है, ह्यूमन क्या सफर करता है डिसऑर्डर, तो उसमें रिजल्ट होता है कि एनियोप्लॉइडी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल, एनियोप्लॉइडी की वजह से मोनोसोमी क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से किसी ऑटोसोम में डाउन सिंड्रोम होता है। दूसरा और में भी यही ऑप्शन पूछा है कि साइट एन एग्जांपल फॉर अ डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन एडिशनल वन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, यही केस जब यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आपको एक्स एक्स वाई दिख रहे हैं, वैसे ही अगर आपको 21 वाला क्रोमोसोम ट्रिपल दिखे तो यानी कि उसको डाउन सिंड्रोम का वो कैरियोटाइप है। एंड उसमें आपका कंजेनाइशल हार्ट डिजीज, फ्लैट फुट, प्लस ब्रॉड माउथ, ओपन माउथ एंड फरो टंग, ये सब फीचर होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन। 30th क्वेश्चन आपको एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। So 30 question is showing the declining cases of malaria, and a data is given in which from the above statistics record here maximum death। तो अब स्टैटिस्टिक्स से दिखा रहे हैं कि किन ईयर्स में कितनी डेथ हुई है मलेरिया की वजह से, वो शो हो रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट यू हैव टू टेल from the above statistics which year record maximum death due to malaria. One of the host of malarial parasite is mosquito. These are the questions. Which part of the life cycle take place in them? In mosquitoes, it is asked which part of the life cycle of plasmodium take place. एंड अबव स्टैटिस्टिक्स से जिस ईयर में मैक्सिमम डेथ रिकॉर्ड हुई है मलेरिया से, वो कौन सा ईयर है, तो आप देखेंगे 2000। यहाँ पर आप देखेंगे केसेस कितने थे और डेथ कितनी थी। तो सबसे ज्यादा डेथ्स आपको दिख रही दे रही हैं चार्ट में, 97 दिख रही हैं आपको सबसे ज्यादा डेथ 2018 में दिख रही हैं। वन लाइफ साइकिल जो मलेरियल पैरासाइट में होती है मॉस्किटो की के अंदर जो होती है, वो होती है सेक्सुअल लाइफ साइकिल, जहाँ दोनों गैमेटोफाइट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूज होते हैं, एंड वो स्पोरोजोइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेजेस, फ्यूजन ऑफ गैमेटोसाइट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजाइट इज सीन इन द plasmodium life cycle is seen in the mosquito. Chills and the fevers recurs in the person suffering from malaria. What is its cause? चिल्स और फीवर्स जो होते हैं पर्सन जो मलेरिया से सफर करता है, उसका कॉज है कि वो हीमोजोइन नाम के और मटेरियल से होते हैं, जो कि आरबीसी के बर्स्टिंग से बनता है। जब आरबीसी में बहुत सारे मेरोजोइड्स डेवलप हो जाते हैं, आरबीसी बर्स्ट होता है, तो उस वक्त चिल्स और फीवर्स होते हैं। नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म के से होता है, तो हम बता सकते हैं कि मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। तो यू विल गिव दैट आंसर। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे होती है। एक्सप्लेन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू इट्स इम्प्लांटेशन। और फिर हमको पूरे स्टेजेस बताने हैं किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, उसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेट अस ट्राई टू सी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द इम्प्लांटेशन टिल द इम्प्लांटेशन।
तो आपको पता ही है इम्पुलाइज जंक्शन में जब फर्टिलाइजेशन होगी, then it will change into the morula. Continuous cleavage will be taking place in the embryo, and then the ball of mass of cells will be formed called as morula, and then mulberry like. Slowly it will be changing into the blastula by making the stages.